कुछ अर्सा पहले हमने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी और आप लोगों को बताया था कि बांग्लादेश चाहता है कि राफेल फाइटर जेट ले। आज हमारे पास इंटरनेशनल मीडिया का रिपोर्ट आया है जिसमें इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश चाहता है कि राफेल फाइटर जेट को लिया जाए। चलिए इस इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सच में बांग्लादेश राफेल फाइटर जेट लेने की बात कर रहा है, क्या राफेल बांग्लादेश के लिए एक अच्छा फाइटर जेट हो सकता है। इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। France is actively pursuing a contract with Bangladesh for the sale of 2 batches of Dassault Aviation's Rafale F-3 and F-4 fighters, as reported by Aviance Legendaires. These negotiations, driven by the interim government led by Prime Minister Mohammad Yunus, are part of a broader effort to modernize the Bangladesh Air Force, enhancing its air defense capabilities, maritime strike power, and counterattack operations. However, while the Bangladesh Air Force has not denied the reports, members of parliament in Dhaka remain more guarded, with some suggesting this silence is a tactic to keep negotiations with France confidential. Local media recently reported that the advanced negotiations between Dhaka and Paris focus on 2 separate batches of Rafale fighter jets. The first batch comprises 4 Rafale F-3 aircraft, 3 two-seaters and 1 single-seater, from the French Air and Space Forces stock, while the second involves 8 new Rafale F-4 single-seaters. The Rafale F-4 standard represents a substantial leap in connectivity and combat performance. It features advanced network capabilities, improving situational awareness and decision-making in contested environments. The upgraded RBE-2 AESA radar and Telios pod offer enhanced detection and tracking abilities for air and ground targets. The arsenal includes long-range Meteor missiles, Scalp cruise missiles, and precision AASM bombs, boosting its strike power. In March 2017, Bangladesh initiated a tender for 8 new multi-role combat aircraft, with an option for 4 additional units to strengthen national air defense. The Rafale has been competing against the Eurofighter Typhoon for this contract, valued at nearly 2.5 billion euros. In this competitive context, defense suppliers are highlighting their products' strengths while addressing perceived weaknesses in competitors' offerings. One argument raised against the Rafale is its presence within the Indian military, raising concerns in Bangladesh about reliance on the same suppliers as its neighboring country. Some contend that using the same fighter as India could put Bangladesh at a tactical disadvantage in potential conflicts, as India has a detailed understanding of Rafale's capabilities and limitations. Bangladesh Air Force's specifications for new combat aircraft are particularly stringent. Requirements include twin engines with a minimum dry thrust of 5,500 kilograms and over 8,000 kilograms with afterburner, at least 8 hardpoints, and a payload capacity of at least 5,000 kilograms. Avionics must feature electronically scanned array radar with a range of 150 kilometers for air-to-air missions and 50 kilometers for air-to-ground. जैसे आप सबको पता है कि बांग्लादेश इस टाइम पे चाहता है, बांग्लादेश की एयरफोर्स की हम बात करें तो बांग्लादेश एयरफोर्स रिसेंटली टाइम में उन्होंने कई सारे डील करने की बात की, कई सारे फाइटर जेट्स को देखा, उसकी टेस्टिंग ली। सबसे पहले तो बांग्लादेश ने GF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने की बात की, जिसमें यह भी कहा गया बांग्लादेशी मीडिया की तरफ से कि बांग्लादेश एयरफोर्स GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के 80 के करीब फाइटर जेट लेने वाले, और जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान पहले फेज़ में 18 से 20 फाइटर जेट बांग्लादेश को डिलीवर करेगा। ये चीज़ देख के मुझे उस टाइम पे काफ़ी अजीब लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, पाकिस्तानी मीडिया में भी बात नहीं आई। खैर वो दिन कुछ गए और उसके बाद बांग्लादेशी मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट आई कि बांग्लादेश एयरफोर्स GF-17 थंडर के बाद जो है वो J-10C लेने की बात कर रहा है, अभी राफेल बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक बांग्लादेशी को खुद भी कंफर्म नहीं हो रहा कि बांग्लादेश के लिए कौन सा फाइटर जेट बेस्ट होने वाला है। अगर बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए अच्छा फाइटर जेट होना चाहिए तो वो कोई ऐसा फाइटर जेट ले जो कि बांग्लादेश के आने वाले वक्त के लिए उनके लिए काम आ सके, जैसे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 या राफेल हो गया,
या बाकी F-16 वगैरह फाइटर जेट हो तो वो हो सकता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है कि भाई बांग्लादेश जो है वो चाह रहा है कि राफेल फाइटर जेट को लिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश की नज़र कई दिनों से इस फाइटर जेट के बारे में है। और ये देख के मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि यार बांग्लादेश ने राफेल फाइटर जेट लेने का इरादा कर लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिए।